There are many different metabolic processes going on within the human body. The body needs a continuous supply of oxygen for these processes. This is provided by the respiratory system. The primary function of the respiratory system is to supply oxygen to the blood, which carries it to every cell in the body. Within the cell, the oxygen is exchanged for carbon dioxide, which is carried back to the lungs and exhaled. Let us examine this process in detail. Inhalation starts when the diaphragm contracts. This causes the contents of the abdomen to move downward. Simultaneously, the rib cage expands. This results in an increase in volume, which in turn causes a decrease in pressure inside the chest. As a result, air moves in. Air enters through the mouth and the nose. Here, the air is filtered, warmed, and humidified. It then passes through the larynx and the trachea. In the chest cavity, the trachea splits into two smaller tubes called bronchi. Each bronchus then divides into smaller tubes called bronchial tubes. The bronchial tubes lead directly into the lungs, where they divide into many smaller tubes which connect to tiny sacs called alveoli. The alveoli are surrounded by tiny blood vessels called capillaries. The inhaled air passes into the alveoli and then diffuses through the capillaries into the arterial blood. The alveoli and the capillaries are separated by alveolar capillary membrane. Oxygen diffuses into arterial blood due to differences in partial pressures across the alveolar capillary membrane. At the same time, the carbon dioxide in the blood within the capillaries diffuses into the alveoli across the alveolar capillary membrane. The lungs have a natural elasticity. So when the diaphragm relaxes, they recoil from the stretch of inhalation. This causes the carbon dioxide-rich air within flows back out until the pressures in the chest and the atmosphere reach an equilibrium. This completes the cycle, and the process starts anew with the next inhalation. तो ये था क्लास, आप लोगों को समझ आ गया इनहेलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? इनहेलेशन मैंने आप लोगों को बताया अभी क्लास में जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे कि इनहेलेशन में क्या होता है। हम जो एयर लेते हैं अंदर वो ऑक्सीजन में रिच होनी चाहिए, दैट इज इनहेलेशन में क्या होता है, आपका डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सहेलेशन में आपका डायफ्रैगम रिलैक्स करता है। उसके बाद लंग्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनहेलेशन में लंग्स एक्सपेंड करती है और एक्सहेलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। और एयर प्रेशर जो होता है लंग्स में इनहेलेशन के दौरान आपका रिड्यूस हो जाता है और एक्सहेलेशन के दौरान इंक्रीज हो जाता है। और एयर मूवमेंट कैसे होती है, आउटसाइड टू इनसाइड और इसमें इनसाइड से आउटसाइड एक्सहेलेशन। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो हमने आज रीड करा है क्लास में। Now how we breathe. Breathing is the mechanical process which results in the passage of air in and out of the lungs. Let's learn how our respiratory system carries out the process of breathing. Before that, observe this experiment. Why were the balloons inside the bottle being inflated and deflated
When the rubber layer at the bottom of the bottle is pulled, the pressure inside the bottle is reduced. This creates a difference in air pressure inside and outside the bottle. As a result, air rushes in and the balloons inflate. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम स्ट्रेच करते हैं या फिर जब हम रिलीज कर रहे हैं बलून को, तो एक बार आपके बलून्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम पुल कर रहे हैं रबर लेयर को, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इनसाइड द बोतल, जिसके कारण एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। On the other hand, if you push the rubber layer inwards, the pressure inside the bottle increases as compared to that outside. This तो जब हम रबर लेयर को ऊपर पुश करेंगे तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और बाहर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, आपका अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। पुशिंग द रबर लेयर इनवर्ड्स इंक्रीजेस एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल। causes the air to move out. The balloons now deflate. ठीक है, अब इसमें से क्या हो गया, आपका एयर बाहर चली गई, जिसके कारण बलून्स डिफ्लेट हो गए। Air pressure inside and outside the bottle. As a result, air rushes in and the balloons inflate. On the other hand, if you push the rubber layer inwards, the pressure inside the bottle increases as compared to that outside. This causes the air to move out. The balloons now deflate. The rubber layer in this setup represents the diaphragm. The space inside the bottle is analogous to the thoracic cavity, and the two balloons are like the two lungs. As in this setup, breathing also works on the principle of difference in air pressure. Breathing is carried out in two stages: inhalation or inspiration and exhalation or expiration. Breathing in is called inhalation. During inhalation, air moves into the lungs. Let's see how this happens. Inhalation starts when the muscles of the diaphragm contract and flatten in shape. Simultaneously, muscles present between the ribs contract. This causes the ribs to move upwards and outwards. The chest cavity expands. This reduces the air pressure inside the thoracic cavity. Consequently, air enters the lungs from outside via the nostril, pharynx, larynx and trachea and the bronchi. The air finally reaches the alveolar region, which is richly supplied by blood capillaries. In the alveoli, oxygen diffuses into the blood and carbon dioxide moves from the blood to the alveolar region. This completes the inhalation process. तो क्लास आज हमने जो रीड करा उसके बाद आपने डीजी में देखा कि इनहेलेशन किस तरह से कैरी आउट होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो टुडे योर वर्क विल बी, आज जितना भी हमने रीड करा है आप उसको रीड कर लेना, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।